Very dear students. Audible better. Yeah. Nuclear physics का रिवीजन बेटा जल्दी शॉर्ट एंड क्रिस्पी रख लेते हैं. Not waste much of the time. Please find this one. First one देख लीजिए बेटा. Nuclear force. You know that of all the forces in the universe, nuclear force is the strongest and shortest in the range, isn't it? Nuclear force are strongest, attractive, and but they are short range. इसमें जो force होती है ना बेटा, force between neutron will be equal to force between a neutron proton. That will be equal to force between a proton and as well as of a proton, isn't it? बस for a stable nucleus, जब भी हम लोग एक stable nucleus के बारे में बात करते हैं, for a stable nucleus, repulsive attractive force must be equal to nuclear force. Must be equal to nuclear force, not neutron. N is your nuclear force, right? So I can say that nuclear forces are the strongest attractive force, but short in range, isn't it? And for the stable nucleus, repulsive attractive force, repulsive electrostatic force must be equal to your attractive nuclear force. Electrostatics will be repulsive in nature, beta, yaad rakh lijiye, and nuclear force will be attractive in nature. N is your nuclear. N is your nuclear force. E is your electrostatic force. Electrostatic force. अब एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, याद होगा आप लोग, X, Z, E. ये क्या होता है? मास नंबर. A represents me the mass number and Z represents me the atomic number. Z represents me the atomic number. ये तो छोटी-छोटी चीजें आप लोग ऑलरेडी आइडिया रहेगा ही रहेगा, isn't it? ना देखो, कभी भी हम लोग एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहे हैं बेसिकली, isn't it? So if I'm writing a nuclear reaction, writing a nuclear reaction. बताइए बेटा लिखने का तरीका एक बार कोई. How to write a nuclear reaction? मान के चलो some initial nucleus है मेरे पास, some initial nuclei, say for example C. अगर हम लोग इसको एक attacking particle से attacking particle मान के चलो C, but दोनों react होते हैं, we get a new product that is nothing but equal to your end nucleus. एक end nucleus बनता है, that I am representing it by letter capital D. उसके साथ एक radiation भी निकलता है, isn't it? या इसको हम लोग emitting particle बोलते हैं या daughter nuclei बोलते हैं.
emitting particle, and that is represented by letter say मान के चलिए T. So this is the way how do you write a nuclear reaction. Initial nuclei plus some attacking particle must be giving you some end nucleus plus of certain radiations in the form of emitting particle called as of your daughter nucleus. Am I clear? Am I clear? Sure. Sure. Next one. Nuclear size. First important formula जिस पे problems बनते हैं basically nuclear size. याद है? Size of the nucleus is directly proportional to what beta? Atomic mass. Size of nucleus is directly proportional to your atomic mass. याद रख लीजिए, isn't it? So size of the nucleus मतलब volume, isn't it? Nucleus is the part of spherical shape, so you can say that volume of your nucleus is directly proportional to your mass number. Volume मतलब 4/3 pi into your r cube is directly proportional to your mass number, isn't it? अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, ये बात याद रख लीजिए, isn't it? So अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स अगर कम हो रहा है then the nucleus will become for me unstable. So I can say that nucleus gets unstable. Nucleus gets unstable. So decay start हो जाएगा. So decay start हो जाएगा. So decay का start होने का reason क्या है? तो अगर size increase हो रहा है basically, the size has been increasing, the nuclear force will be decreasing. अगर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल, सो डिकेइंग उसका स्टार्ट हो जाएगा. यानी अगर एक एलिमेंट है मेरे पास x न्यूक्लियस, सो दैट विल डिसइंटीग्रेट इनटू y प्लस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर रेडिएशन. एम आई क्लियर? देखिए, सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं तो विल बी गेटिंग वन स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस वन. r इज इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर ऑफ 1/3. I hope you remember this one. First formula for doing the numericals, r is equals to your r naught a to the power of 1/3. R naught is known as of your Fermi constant. R naught is known as what? Fermi constant, जिसकी वैल्यू होती है approximately 10 to the power of -15 meters, and it is also called as of your 1 Fermi. 1 Fermi. Am I clear? Am I clear? So r is equals to r naught a to the power of 1/3. अगर न्यूक्लियर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स विल डिक्रीज. So what happens to the nucleus? Nucleus will become unstable, so decay will start. अगर decay start हो रहा है मतलब x which is stable will disintegrate into your y when emitting certain amount of your radiation. Am I clear with this one? Yes, sir. Yes. Check. The next one is न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. चलिए एक इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, मैं चलते बाद में कर लेते हैं तो नहीं मिल क्लास ही जाएगा. नेक्स्ट वन इज अबाउट योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग मतलब मिला के रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं. Isn't it? So what do you mean by nuclear binding energy, beta? The energy required to separate an atomic nucleus को completely separate करना है किसमें? Into the protons and neutrons. एक न्यूक्लियस को अगर हम लोग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में अगर completely separate कर सक रहे हैं, that energy whatever is been required to separate them is called as of what? Binding energy. यानी the energy required to separate an atomic nucleus completely into its constituent protons and neutrons, or equivalently the energy that would be liberated by combining the individual proton and neutron into a single nucleus will be called as of your binding energy, isn't it? मान के चलो मेरे पास एक न्यूक्लियस है, अगर उस न्यूक्लियस को सेपरेट करना है यानी the whatever energy I'm requiring to separate an atomic nucleus मतलब प्रोटॉन and as well as of your neutron. मान के चलो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लग रही है मुझे, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं?
बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी मतलब और एक डेफिनेशन भी है इसका, द एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड, दैट वुड बी लिबरेटेड बाय कंबाइनिंग individually एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑफ योर बाइंडिंग एनर्जी। मान के चलो मेरे पास प्रोटॉन है सेपरेटली, न्यूट्रॉन है सेपरेटली, इन दोनों को अटैच करने के लिए, दोनों को मिला के अगर मुझे एक न्यूक्लियस बनाना है तो जो प्रोसेस में मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को भी हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं बेसिकली। अब ज्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि आपको फिर बड़ा सा लेसन हो जाएगा, बस जितना याद रख लीजिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई कैन से दैट द एनर्जी दैट वुड बी लिबरेटेड बाय कंबाइनिंग एन इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू अ सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑफ योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। Am I clear with this one? Yes. Am I clear with this one? Yes, sir. तो मान के चलो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अटैच कर रहा हूँ, प्रोटॉन कैसे लिखेंगे बेटा, z टाइम्स ऑफ योर प्रोटॉन प्लस a माइनस z ऑफ योर न्यूट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग ए न्यू न्यूक्लियस दैट इज xza plus certain amount of your energy, that is nothing but binding energy. This is called as of your binding energy. Am I clear? Yes, sir. चलिए यहां से एक छोटा पॉइंट याद रख लीजिए बेटा, when reactants are combining to form a stable product, there is mass loss. There is mass loss, mass of your loss. This mass loss is called as of your mass defect. Is called what for me? Mass defect. Okay. So delta M will be equal to Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutrons, minus mass of your nucleus, जो भी element अपने को combine कर रहे हैं. So that will give me the binding energy. Sorry, mass defect. Mass defect is equals to your Z into mass of proton plus E minus Z into mass of your neutrons minus M into your X. Am I clear with this one? What is the condition? Whenever a reactant is been combining to form a stable product, there is a mass loss. That mass loss is only called as of what for me? Mass defect. So mass defect is equals to your Z into mass of proton plus the A minus Z into your mass of neutron minus total mass of nucleus से जो निकालोगे, जो difference आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? Mass defect बोल रहे हैं basically. यानी बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका देख लीजिए बेटा, EB अगर मैं निकाल रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी EB विल बी इक्वल टू डेल्टा M इंटू योर C स्क्वायर. ठीक है, अगर डेल्टा M is in A mu, so I can write that one atomic mass unit will be equal to 1.66 into 10 to the power of minus 27 kgs. Isn't it? One atomic mass is equals to how much one? This much. That means I can write this binding energy is equals to your binding energy is equals to delta M in AMU. Delta N in AMU अगर दे रहा है तो डायरेक्टली आप क्या करो उसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर लीजिए. That will directly give me the answer. अगर AMU अगर आपको मास डिफेक्ट अगर AMU में दे रखा है, so that value into 937.5 MeV that will give me the answer. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Yes, sir. Chalo, next one. And very important term better. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. So graph भी है बेटा, very important, very important for competitive examination. मान के चलो मेरे पास एक एलिमेंट है, that is nothing but of your X, Z, A. A is mass number, Z is your atomic number. A is nothing but what beta? Number of nucleons. A is nothing but what for me? A is equals to your number of nucleons. Nucleons matlab mass, isn't it? Z is your atomic number. So I can write here binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is right now for me EB divided by mass number A, isn't it?
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बोलेगा बेटा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स इंफॉर्मेशन, it gives the information how stable is a nucleus. ये न्यूक्लियस कितना स्टेबल है उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज नथिंग बट EB डिवाइडेड बाय ए। यानी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है या ओके टाइप ऑफ से स्ट्रॉन्ग है, यानी उसकी स्टेबिलिटी जो बताता है बाइंडिंग एनर्जी, यानी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी बताने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर योर न्यूक्लियन। अब इसका कंडीशन देख लीजिए बेटा, अगर बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर mass numbers lesser than 30. Binding energy is lower for what beta? For all the elements whose mass number is lesser than of your 30 and whose mass numbers are greater than 170. Am I clear? So if binding energy is lower for what beta? For all the elements whose mass number is lesser than 30 and whose mass numbers are heavier elements like of your mass numbers greater than 170 are right now for me having the lesser binding energy. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Yes, sir. Yes, sir. Very important. Next one. Nuclear fission and fusion. Nuclear fission and fusion. Okay. अब इसको लिखने का तरीका देखो बेटा, if I'm talking about fusion or if I'm talking about fission, first one, if I'm talking about your fission, FISSION, fission मतलब splitting, isn't it? And a heavier element will split to become more stable, that is called as of your fission. So fission is nothing but simply I can remember splitting, यानी मान के चलो मेरे पास एक न्यूक्लियस है X that is splitting to form Y plus certain amount of your energy, whatever it may be is coming right now with that one, certain amount of your energy will be liberated along with that one, like say मान के चलो some atomic number and amount of your energy, that is nothing but of your E or even whatever it may be. Then fission मतलब क्या? Splitting, X is splitting into Y plus Z with that one certain amount of your energy. Second one, fusion. Fusion मतलब जोड़ना, isn't it? It is nothing but I can say joining of your nucleus. So it is your joining of nucleus. Joining of nucleus. Yani lighter elements will combine to form a heavier element like 1H1 plus 1H2, isn't it? So like that one. यहाँ पर uranium is been disintegrating into krypton, barium, वैसा कुछ condition में. Fission मतलब splitting. And heavier nucleus will split into a lighter nucleus. Fusion मतलब lighter elements will combine to form a heavier element, isn't it? Fusion, that is joining of your nucleus. तो यहाँ पर क्या होगा? A plus B, मान के चलो दो न्यूक्लियस है, ये मिलके एक नया एलिमेंट बनाएंगे, that is nothing but C plus an amount of energy is been liberated with that one, delta E. दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है बेटा. I can write one point in both the cases. In both the cases, I can say that energy is released. Both the cases, energy is released. अब एनर्जी लिखने का तरीका देखो बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए everyone, very important. डेल्टा E1 यानी फ्यूजन के अंदर लिखने का तरीका, मास ऑफ योर A प्लस मास ऑफ योर B जो कंबाइन हो रहे हैं माइनस मास ऑफ C which is been formed into your C square, that will give me the delta E. उसी तरह से डेल्टा E2 fission के अंदर delta E2 is equals to mass of your X minus mass of your Y minus mass of your Z, पूरे minus में into C square will give me the delta E2. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Yes, sir. So delta E1 is, this is for your fusion, this is for your fusion, this is for your fusion Q, and delta E2 will be equal to your mx minus my minus of your mz. This is for your fission. This is for your fission. Am I clear? चलो एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर, एनर्जी कब रिलीज होगी कब ऑब्जर्व होगी वो इंपॉर्टेंट है अपने, isn't it? मान के चलो अगर
एनर्जी रिलीज्ड हुई, isn't इस रिएक्शन में अपने को अगर एनर्जी रिलीज हुई, सो एनर्जी रिलीज हुई टेक इट एज ऑफ योर पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड मतलब पॉजिटिव, और इवन सप्लाइड है, isn't it, will be equal to your, or even supplied energy is called as what for your Q value. अगर हम लोग एनर्जी सप्लाइड कर रहे हैं, एनर्जी इज सप्लाइड, then it will be your negative, isn't it? Am I clear? Energy released or even supplied, which will be, अगर energy release है तो positive, अगर energy supply कर रहे हो तो negative. So this energy which is being supplied or being released is given by the formula of Q. Q value is equals to your delta M into your C square. Q is nothing but what for your Q value. So क्या बोलते हैं अपन? Q value, energy released or energy supplied can be calculated by the formula Q is equals to your delta M into your C square. Delta M is your mass defect. So this is your Q value, isn't it? एनर्जी अगर रिलीज भी हो रही है या सप्लाइड हो रही है तो उस वाले कंडीशंस में एनर्जी और क्यू वैल्यू लिखने का तरीका, डेल्टा एम निकालो मल्टीप्लाई विद द सी स्क्वायर, दैट विल गिव मी द क्यू वैल्यू. एम आई क्लियर विद दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, अल्फा, गामा, बीटा एंड गामा डीके. वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कभी कभी. So I'm talking about first one is alpha decay. First one is your alpha decay. Alpha decay. Yeah, the reaction with, like say some parent nucleus XZA will combine or release, or it will give me a product that is nothing but of your Y, whose atomic number will decrease by 2 and whose mass number decreases by 4. Plus उसके साथ एक alpha particle release होती है, that is 2He4 plus certain amount of your energy. Isn't it? Alpha particle क्या होता है बेटा? Helium nucleus. This will be your helium nucleus. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. तो Q वैल्यू निकालने का तरीका, Q is equals to mx minus my minus m of your alpha particle multiply with your C square. That will give me the value of the Q value for your alpha decay. Okay. अब इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है, इट इज इन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगी. अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इसके अंदर, राइट नाउ आई कैन से दैट I can write for the relation for this one, mass of your y into velocity of your y. Initially पढ़ने से पहले momentum is 0. After disintegrating, the momentum of the daughter nucleus must be equal to the momentum of your alpha particle into velocity of an alpha particle. तो इसमें से मैं velocity of alpha particle निकाल सकता हूँ, that is equals to your my into vy divided by m into your alpha particle. Isn't? अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. ये अल्फा ऑफ डॉटर न्यूक्लियस निकालना है तो vy will be equal to your mass of alpha particle, velocity of alpha particle divided by mass of your daughter nucleus, that is nothing but of your my. Done. So this is my first point, A. Number B, energy. Energy is in the form of Q. So Q is equals to your half into mass of your daughter nucleus, velocity of your daughter nucleus plus half into mass of your alpha particle, velocity of your alpha particle, isn't it? So this one will be called as of what? Kinetic energy of alpha particle. Kinetic energy of your alpha particle. इसका derivation है बेटा, अगर हम लोग इसको simplify कर रहे हैं, so I'm taking this equation right now of 1, isn't it? And this one if I'm taking it as equation 2, solving 1 and 2, we get kinetic energy of an alpha particle. Kinetic energy of your alpha particle is equals to Q into mass of your daughter nucleus divided by mass of your alpha particle plus mass of your daughter nucleus. बस इतना याद रख लीजिए, that is more than enough. Done.
मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस अगर आपको मालूम है, अगर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो विल बी गेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू, in terms of your cube, it will be your cube. Mass of your daughter nucleus is right now a minus 4 divided by this will be equal to 4 minus a minus 4. Yani this will come out from your a. So kinetic energy of alpha particle is equal to your q into a minus 4 divided by your a. Clear? Yes, sir. तो अल्फा पार्टिकल का फिर एक बार देख लीजिए बेटा कंडीशन. अल्फा पार्टिकल में दिस पेरेंट न्यूक्लियाई XZA will get disintegrate into your daughter nuclei whose atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. Along with that one we get an alpha particle and certain amount of energy. So whatever the Q value we are getting, that Q value has been calculated by the formula. Q is equal to mx minus my minus m of alpha particle whatever we are getting into c square. इसके अंदर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन. तो अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा के फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी Q वैल्यू ले रहे हैं, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर पेरेंट न्यूक्लियर 1 and 2 को सिंपलीफाई कर रहे हैं, वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू Q into mass of daughter nucleus divided by mass of alpha particle plus mass of daughter nucleus. mass of your daughter nucleus आपको ऑलरेडी मालूम है, mass of your daughter nucleus is equals to a minus 4 and mass of alpha particle is equals to how much will be 4 and mass of your y is equals to a minus 4. यानी a minus 4 करे तो क्या हो जाएगा, 4 4 चले जाएगा, तो ये आ गया. So that is the reason I am writing here kinetic energy of alpha particle is equals to, in terms of mass number दे दिया, q value दे दिया, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. So kinetic energy of alpha particle is equals to q into a minus 4 divided by your 4. Am I clear? Yes, sir. Yes. देख लीजिए एक बार. डन बेटा. Yes. Yes, sir. सर a minus 4 कैसा हो रहा बता सकते हैं आप? a minus 4 ये मास ऑफ y है ना बेटा. मास तो ऑफ मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियस कितना होता है, a minus 4 ही है ना. यहाँ पर रिएक्शन में देखो, दिस इज अ मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियस my. तो -4 ही क्यों कर रहे हैं सर? ये मास नंबर डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, 4 से डिक्रीज हो रहा है ना रिएक्शन के अंदर. अल्फा डीके के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, मास नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू फॉर्म इन हीलियम न्यूक्लियस. 2He4 दे रहा है ना बेटा यहाँ पर. अच्छा अच्छा, ओके सर. 2He4 दे रहा है, तो इसमें से जो मास नंबर है ना -4 कर रहा है. अलॉन्ग विद दैट वन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज्ड. ओके सर. Done?
Sir, हाँ बेटा, sir, how you write that equation A1, sir? कौन सा? A वाला, sir. हाँ? A वाला, sir, equation. वाला देखो बेटा, ये तो न्यूक्लियस था बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग. दिस वन वाज ऑफ योर पेरेंट न्यूक्लियस. So its initial momentum was 0. After disintegrating, this is forming one daughter nuclei, and along with that one alpha particle. The initial Yes, sir. momentum must be equal to final momentum, no? Initial momentum must be equal to final momentum, because in all the collisions momentum is conserved. Initial momentum will be 0. This will be equal to your mass of your y into velocity of your y plus these are moving in opposite direction, s direction or s direction. So this will be equal to minus mass of alpha particle, velocity of alpha particle. Yes. ठीक है. अब वो बड़ी कहानी है, उसके पीछे भागोगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा. अगर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वगैरह दिया तो डायरेक्ट वैल्यू से लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, न्यूमेरिकल्स में मैं आपको करवा देता हूं फिर से. नेक्स्ट वन देख लीजिए, बीटा डीके. Beta decay, isn't it? That means this is your E minus or E plus. E minus मतलब क्या बेटा, कोई बता सकता है? E minus is nothing but what? Electron. E plus से मतलब क्या होता है? Positron. Isn't it? And nu is represented by, ये symbol किसका होता है बेटा? This is the symbol for your neutrino. And nu bar is the symbol for your anti-neutrino. Isn't it? Am I clear? सर पोजिट्रॉन और प्रोटॉन सेम है सर? Positron. Positron. हाँ सर, अलग है सर, प्रोटॉन से अलग है सर. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन मतलब 1h1 पॉजिटिव नेचर. ओके सर. चलो, इसके अंदर अगेन वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड बेटा. एक होता है बीटा प्लस, बीटा माइनस एंड के कैप्चर, व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन. अगर मैं बीटा प्लस डीके के बारे में बात कर रहा हूँ, बीटा प्लस डीके, इसका रिएक्शन देखो क्या होता है. एक प्रोटॉन जो होता है बेसिकली इट विल गेट डिसइंटीग्रेट इनटू ए न्यूट्रॉन प्लस ऑफ योर पॉजिट्रॉन, प्लस उसके साथ एक एंटी पार्टिकल निकलती है व्हिच इज नोन एज ऑफ योर न्यूट्रिनो. ये रिएक्शन याद रखना है. प्रोटॉन इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस certain amount of energy has been released in the form of your neutrino. Am I clear with this one? Yes, sir. बीटा प्लस के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए. अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड ये दे रखा है, तो उसका रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? दिस विल बी इक्वल टू योर वाई. न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1, मास नंबर विल रिमेन फॉर मी द सेम, प्लस विद दैट वन सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिट्रॉन इज बीन लिबरेटेड, दैट मींस ई पॉजिटिव प्लस ऑफ योर न्यूट्रिनो. ये लिखने का तरीका है. Am I clear with this one? Yes, sir. अब इसका Q वैल्यू बताइए, इसका Q वैल्यू लिखने का तरीका बताइए. Q value for this one value will be equal to how much? Q is equals to your mass of your x minus mass of your y minus 2 times of mass of your electron. 2 times the mass of your electron. अब इसका proof मत पूछिए because again it will take much time. बस याद रख लीजिए, that will be helpful for me for doing the numericals. So Q value of your beta plus निकालना है मुझे, so that will be equal to mx minus my. mx is nothing but mass of your initial nuclei minus mass of your daughter nuclei whatever is been formed minus 2 times the mass of electron. ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है बेटा 2 वो, तो वो अभी मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा है यहाँ पर, बस जस्ट राइट नाउ रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द Q फॉर योर बीटा पॉजिटिव. तो बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा है? A proton is disintegrating into a neutron with a positron and as well as of your neutrino is been liberated in that one. Am I clear with this one? Yes. Next one, beta minus decay. If I'm talking about your beta minus decay, beta minus decay, beta minus decay. बीटा माइनस डीके लिखने का तरीका, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, दिस न्यूट्रॉन इज बीन डिसइंटीग्रेटिंग इनटू, एक न्यूट्रॉन फट के एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है. दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ योर बीटा माइनस. बीटा माइनस में न्यूट्रॉन जो है ना डिसइंटीग्रेट होके एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज बीन कमिंग आउट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ योर एंटी न्यूट्रिनो.
डन। Yes, sir. इसको रिएक्शन में लिखने का तरीका मान के चलो x z ये है मेरे पास, so this will get convert into your y, proton मतलब z plus 1, isn't it? Mass number will remain for me same, plus यहाँ पर हो गया electron plus of your neutron. This is the way how do we write the reaction. और इसका मास डिफेक्ट लिखने का तरीका बेटा डेल्टा एम, ये डेल्टा एम लिखता है, क्यू वैल्यू नहीं लिखा मैंने, क्यू मतलब इसको फिर मैं सी से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको आप क्यू में से डेल्टा एम लिख लीजिए, दैट विल बी मोर बेटर। क्यू वैल्यू हो गया मतलब डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर लेना, फिर ऐसा हो जाएगा। पहले सभी का डेल्टा एम लिख लेता हूँ मैं बेसिकली, सो दिस इज योर मास डिफेक्ट डेल्टा एम, क्यू वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एम इंटू योर सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका मास डिफेक्ट बताइए बेटा, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू mass of your x minus mass of your y. This is directly the delta f value for this one. Mass defect for your beta minus. Clear? Sure. The next one and very important for me is right now for me. Third one, K capture. Yani we are capturing an electron from the K shell. K capture is nothing but we are capturing an electron from the K shell. K capture. Very important. इसमें क्या होता है बेटा, ये अपने ओन पार्ट्स को खाता है, जैसा आप थोड़े एनिमल्स आपको मालूम होंगे बायोलॉजी में, देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच दे ईट देयर ओन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू सर्वाइव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जो थाली में खाए वही थाली को छेद करना जो बोलते हैं ना, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो ये अपने आप को स्टेबिलिटी रखने के वजह से इट ऑलवेज टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इनरमोस्ट ऑर्बिट एंड ट्राई टू सर्वाइव। ज्यादा कहानी में नहीं जा रहे इसके, इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है देख लीजिए, एक प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन को खा जा रहा है, प्रोटॉन इज बीन ईटिंग दिस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फॉर्मिंग इनटू ए स्टेबल न्यूट्रॉन प्लस ऑफ योर न्यूट्रिन। ये हो गया इसका रिएक्शन लिखने का तरीका, प्रोटॉन प्लस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन गिव्स मी ए स्टेबल न्यूट्रॉन प्लस ऑफ योर न्यूट्रिन। दैट यानी इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूं एग्जांपल, देखो x z ये will be giving you a daughter nucleus y whose atomic number will decrease by 1, mass number will be your A plus as well as of your neutron, isn't it? और इसका mass defect लिखने का तरीका delta m is equal to this is also your mx minus of your my। अगर q वैल्यू लिखना है तो into c स्क्वायर कर लीजिए या 931 AMU कर लीजिए, डिपेंड करता है आपने कैसे लिया हो, isn't it? So in K capture what is happening, electron is captured from the K shell, that is the reason we are writing this one as of your K capture. Am I clear with this one? Am I clear? Yes, sir. Sure. The last one is gamma decay. Gamma decay. This is your electromagnetic radiation. This is your electromagnetic radiation. This is your electromagnetic radiation. इसमें क्या होता है, मान के चले एक मेरे पास स्टेबल न्यूक्लियस है, this is disintegrating into Y with a star mark. Star mark मतलब it is in an excited state. This is in your excited state. This is in your excited state plus alpha power. See, ये जो unexcited state का particle है ना star, this will again become into a stable particle by emitting certain amount of radiation in the form of gamma. Clear? यानी ultimately अगर मुझे equation लिखना है, I can write here x is being disintegrating into your y plus certain alpha particle निकलेगी या इसके साथ gamma particle radiation। Then ये बीटा माइनस के लिए बीटा डी के लिए भी हो सकता है बेटा, वो अलग कहानी है, अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए एक स्टेबल न्यूक्लियस व्हेन इट इज बीन डिसइंटीग्रेटिंग तो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में से फिर एक स्टेबल स्टेट में जाने के लिए इट विल बी लिमिटिंग द रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस में जो रेडिएशंस निकल रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर गामा डीके पार्टिकुलेशन। डन। इसका रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लीजिए एटॉमिक नंबर विल बी रिमेनिंग फॉर मी द सेम, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है? yes sir. So these are the some of the formulas you need to remember in the what do you call that one, nuclear physics. Radioactivity we'll try to do it separately so that we don't what do you call that one, lose the marks related to this one. Burning energy वगैरह निकालने का तरीका इस पे थोड़ा अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिए, that will always be helpful for you. चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, so let me see how far we can do the problems related to this. Good quality questions है बेटा, so we try to be attentive. मान के चलो if m naught is the mass of an oxygen is the mass of an oxygen isotope O870 stop mp and mn are the masses of a proton and a neutron. That the nuclear binding energy of isotope is options are m naught minus 4 times of mass of proton into c square. Okay. Second one is m naught minus 8 times of your mass of proton minus 9 times of your mass of neutron into c square. And third option is m naught into c square. Fourth option is m naught minus 17 times of mass of neutron into c square. Can anyone give me the answer for this one? M naught is the mass of oxygen isotope. MP and Mn are the masses of the proton and neutron. The nuclear binding energy of an isotope will be equal to how much? Binding energy का formula क्या है बेटा? Binding energy is equals to mass defect into your c square. So mass defect लिखने का तरीका इसका कितना हो जाएगा बेटा? Mass of your nucleus that is nothing but m naught minus oxygen मतलब क्या? 8 times the mass of your proton minus 9 times the mass of your neutron into your c square. बस one line का आंसर. Am I clear? Am I clear? yes sir. Sir, can you repeat? क्या बोले? Mass delta m लिखने का तरीका क्या है बेटा? Delta m is nothing but what? M naught is nothing but mass of an oxygen atom minus 8 times the यहाँ पर देखो oxygen वो 817 mass of protons are how much for me? 8. Number of neutrons will be equal to how much for me? 17 minus 8. Done. सर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस करते ना सर, आप माइनस कर रहे हैं। हाँ मास डिफेक्ट नाम है यहाँ पर, कितने बार लिखा रहा हूँ देखो, एक स्टेबल न्यूक्लियस इज बीन डिसइंटीग्रेटिंग हो रहा है तो कैसे लिखोगे आप? माइनस में लिखोगे ना, डेल्टा एम। डेल्टा एम लिखने का तरीका देखो मैंने क्या करवाया आप लोग, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू योर, यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल में x is giving you y and helium particle per certain amount of energy, mx minus my minus m alpha into c square. प्लस कहाँ से आ गया? हाँ हाँ ठीक है सर। डन। क्लियर है बेटा?
चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. दिस इज आल्सो गुड मॉडल. द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. The binding energy per nucleon of lithium and helium nuclei are 5.60 MeV and 7.06 MeV. Okay. In the nuclear reaction, lithium 3,7 plus 1H1 combining to give you 2He4 plus 2He4 plus certain amount of energy Q. My question is, the value of Q is, options are 29.6 MeV, minus 2.4 MeV, 8.4 MeV, and 17.3 MeV. The binding energy per nucleon of lithium and helium nuclei are 5.60 MeV and 7.06 MeV in the nuclear reaction. Isn't it? So what will be the condition for this one? Binding energy of the lithium nucleus कितना हो जाएगा बेटा, पहले ही बताइए. Binding energy of lithium 3,7 will be equal to, binding energy लिखने का तरीका बताइए. Binding energy will be equal to how much will be? This is your 7 into कितना दे रखा है binding energy per nuclear 5.60. So 7 into 5.60 is 39.2 MeV. उसी तरह से you calculate the binding energy of your helium 2He4. So that will be equal to your 4 into binding energy of the helium is given as of your lithium and helium is given as of your 7.06. 4 into 7.06 MeV. This one is also your MeV. So इसको कर लीजिए. So this will come out for me 28.24 MeV. Isn't it? Reaction आपको दे रखा है already. Lithium and 1H1 combining to form your 2He4 plus 2He4 plus an amount of energy. Yani Q value will be equal to 2 times the binding energy of 2He4 minus binding energy of your lithium 3,7. Isn't it? So ये बन जाएगा मेरे पास 2 into binding energy of the helium कितना आ गया 28.24 minus this is 39.2. So this will give me the answer. So Q value will be equal to 2 into 28.4 minus 39. Then this will be somewhere around 17.3 MeV. So this is the method. How do we calculate the value of the Q for the given reaction? एक बार फिर से देख लीजिए बेटा. If there is any doubt, please let me know. Clear? Jueria. Smile. Yes, sir. फॉर्मुलेस याद करना बेटा, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन से बेसिकली तो एक आधा घंटा पे आप लोग सेल्फ पे बैठोगे ना तो फॉर्मुलेस पूरे आराम से निकल जाते हैं. जितने मैंने लिखवाए वो कर लेंगे, खाली पीवाई क्यों खत्म कर दो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इतना बेसिक नॉलेज तो इस चैप्टर के अंदर मिनिमम आपको रहना ही रहना है सीआर में.
न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला क्या था तो बताइए एक बार। R इज इक्वल्स टू योर R नॉट A टू द पावर ऑफ कितना था 1/3 Yes, sir. isn't it? R नॉट की वैल्यू कितनी बताया था मैंने Fermi, one Fermi. 1 फर्मी R 1.2 फर्मी कुछ भी ले सकते हैं बेसिकली अप्रोक्सीमेटली वो दे देगा यानी R1 by R2 will be equal to R नॉट तो कांस्टेंट है तो कैन आई राइट दिस वन एज ऑफ योर A1 divided by A2 to the power of 1/3 लिख सकता हूं क्या Yes, sir. as A1 divided by your A2 is equals to your M1 divided by M2 that is ratio of their masses so I can conserve the momentum अगर momentum conservation हो रहा है तो M1 V1 will be equal to your M2 V2 so I can write here M1 by M2 is also equal to your V2 divided by V1 velocities. So therefore I can write here R1 divided by R2 is also equal to your M1 divided by M2 to the power of 1/3. That will be equal to your V2 divided by V1 to the power of 1/3. Can I write like this? Yes, Yes, sir. sir. R2 in terms of mass or in terms of velocity? डायरेक्टली एटॉमिक मास और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स दे दिया तो सीधा सीधा हो जाएगा A1 अगर मासेस भी दिया तो M1 by M2 अगर वेलोसिटीज में दिया तो V2 by V1 to the power of 1/3 हमें क्लियर चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए ए न्यूक्लियस disintegrate into two nuclear parts okay which have their velocities in the ratio of 2:1 अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया ना तो 4 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे किस्मत का है कि आपने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला आ गया अगर छोड़ के जाओगे तो ऐसे वाले छोटा वाला प्रॉब्लम देन इट विल बी वेरी ह्यूज लॉस फॉर दिस क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस find the ratio of their nuclear sizes तो बताइए आंसर what will be the answer beta R1 divided by R2 will be equal to what is the formula V2 by V1 to the power of 1/3 so that will be equal to 1/2 to the power of 1/3 yani this is 1/2 to the power of 1/3 done Yes, sir. I hope you are clear with this one. ये क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग the ratio of radii of nucleus of aluminum and hydrogen atom is first option is 3:1 second option is 1:3 third option is 2:1 fourth option is 1:2 ratio of radii of the nucleus and R1 by R2 will be equal to A1 by A2 to the power of 1/3 isn't it A1 first one कौन सा बेटा एल्यूमिनियम का मास 26. 27 हाइड्रोजन के लिए 1 so 27 to the power of 1/3 यानी this one is 27 to the power of 1/3 divided by 1/3 1/3 is 1/3 यानी this will be equal to 3:1 आ गया डन Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए the rest mass energy of a nucleus is
the rest mass energy of your nucleus is? First option is 510 kilo electron volt, 931.5 mega electron volt, 510 mega electron volt, or 931 kilo electron volt. तो समझ के दीजिए, the rest mass energy of your nucleus, यानी एनर्जी का फॉर्मूला E is equals to delta M into C square, isn't it? न्यूक्लियस के लिए 9.1 into 10 to the power of minus 31 into 3 into 10 to the power of 8 का होल स्क्वायर. इसकी यूनिट होती है जॉल, एनर्जी की यूनिट होती है जॉल. इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर मुझे लिखना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में अगर मुझे लिखना है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 9.1 into 10 to the power of minus 31 into 9 into 10 to the power of, this will become how much for me beta? 26 divided by 1 electron 16. कितना होगा? 9 into 10 power 16. 1.6 into 10 to the power of minus 19, 1 electron volt. 1 electron volt is equal to 6 into 10 to the power of minus 19 joules. So 1 joule will be equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 electron volt, mega electron volt में. तो इसमें कितना आ रहा देख लीजिए. Sir, 9 into 10 power 16. हाँ, 9 into 10 to the power of 16 है, गलती से 16. कितना आ रहा देख लीजिए. कितना आ रहा है? और सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले. 9.1 into 9 into 10 power minus 31 plus 16 कितना हो रहा है? 35. हाँ 35. पूरा Yes, sir. 16 or 19. 16 कितना हो रहा है? 16 or 19, 35 हो रहा है. टेन पावर 4 आ रहा है. 10 power First option है. डिवाइडेड बाय कितना है? 1.6. तो पूरा 10 power 4 आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. 1 into 9 divided by 1.6. तो ऑब्वियसली 931 तो होने का चांस ही नहीं है. तो इधर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होगा? यानी यहाँ पर 10 पावर 4 मतलब 10 पावर 3 लिख सकता हूँ. मेगा मतलब 10 पावर 6 में, First option. 10 पावर 6 में आना चाहिए. तो 10 पावर 3 में आ रहा है सर, दिख रहा है क्योंकि पावर भी चले गया तो पॉइंट्स में. सो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेशन देख लीजिए बेटा. सर उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? क्या बोले? उसको चार्ज की डिवाइड क्यों कर रहे क्या बोल रही है? हैं? डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? इसको पूरा पावर सिंप्लीफाई कर लो बेटा. -31 + 16 डिवाइडेड बाय -19 -19 के ऊपर चला गया था प्लस. आ गया? चलो सर हाँ बेटा. सर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं ना सर. आप न्यूट्रॉन का खाली मास कंसीडर करें. न्यूट्रल पार्टिकल है ना बेटा. मास Yes, ऑफ sir. न्यूट्रल पार्टिकल है ना. यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ही बोल रहा है. तो डेल्टा एम इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट? मास डिफेक्ट ऑफ योर न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ योर प्रोटॉन एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन. पूरा कंबाइंड कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 to the power of -31 न्यूक्लियस के अंदर. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रल पार्टिकल और एक पॉजिटिव पार्टिकल. तो वो तो स्टेबल हो गया ना बेटा. अब न्यूक्लियस में बचा क्या मेरे पास? न्यूट्रॉन.
डन? यस सर। इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। द ग्राफ ऑफ ln r by r naught, ln r by r naught against ln a is dash. First option is parabola. Second option is straight line. Third option is ellipse. And fourth option is none. बताइए. Straight line. It will be a straight line. The graph of your ln r by r naught against the ln a will be a straight line. क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला अपने पास मालूम है, r is equals to r naught a to the power of 1 by 3. यानी r by r naught will be equal to, this is a power 1 by 3. अगर मैं ln ले लूं on both the sides, it is ln r by r naught will be equal to, this is 1 by 3 ln of your a. Isn't it? If I'm comparing with the straight line equation, y is equals to your m into your x. अगर प्रॉब्लम में स्लोप पूछता तो आपका आंसर क्या होता? 1/3. पूछता तो 1/3 होता, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/3, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1/3. अगर ऑप्शंस में अगर आपको tan में पूछता तो ये आंसर लिखते हैं आप सीधा सीधा. अब स्लोप की जगह 1/3 है, x की जगह हो गया ln ये, और y की जगह हो गया ln of your r by r naught. So it will be a straight line passing from the origin. Is it clear? Yes, sir. Sir, बोलिए. सर आप वो बाइंडिंग एनर्जी प्लस न्यूक्लियन लिथियम एंड हीलियम का कराए ना सर, एक बार वो समझाइए ना फिर से. फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं. यस सर. एक ऐसा हर एक मॉडल वाला करवा देता हूँ मैं आपको. लेट मी सी वेदर यू कैन डू इट. और गुड क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए एक बार. वैसे वाला ये द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन मतलब क्या बेटा? 1H2 and helium, that is 2He4 is your alpha particle or helium, are 1.1 MeV and 7 MeV respectively. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन दे रखा है और हीलियम दे रखा है 1.1 MeV and 7 MeV. The question is the energy released when two deuterons fuse to form a helium nucleus. A helium nucleus is, options are 23.6 MeV, 12.3 MeV, 11.8 MeV and 5 MeV. Binding energy per nucleon for deuteron and helium are given as 1.1 MeV and 7 MeV respectively. The energy released when two deuterons are fusing to form an helium nucleus will be equal to your how much? आ गया. इसका रिएक्शन अगर मैं लिखूं 1H2, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर बेटा. 1H2 plus 1H2, isn't it? The energy released when two deuterons, यानी ऐसे दो ड्यूट्रॉन जब कंबाइन हो रहे हैं तो we are getting an helium nucleus 2He4 प्लस उसके साथ certain amount of energy भी निकल रही है. तो पहले बाइंडिंग एनर्जी
ऑफ 2 ड्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका दैट इज नथिंग बट 2 into 11.2 isn't it, into 2. Am I clear? Sir, why 11.2? Sorry, 1.1 है नहीं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन कितना दे रखा है? 1.1 MeV। Yes, sir. 1.1 into 2. 1.1 sorry, this is 1.1। ये कितना आ रहा है देख लीजिए। 4.4. 4.4 4.4. MeV। उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बताइए, कितने हीलियम न्यूक्लियस है मेरे पास? एक ही हीलियम न्यूक्लियस है ना बेटा, 1। सो मास नंबर ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इज 4 into इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7। सो 4 into 7 28 MeV। अब पूछ रहा है क्या एनर्जी रिलीज कितना होगा इसके अंदर, तो एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू 28 MeV minus 4.4 MeV। So that will become much what? 23.6 MeV. Am I clear? Sir, yes, sir. So, sir, we should write this data according to the reaction, no, sir? हाँ, with respect to reaction, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स है ना, तो 2 लिया मैंने, तो जी, बाइंडिंग एनर्जी मल्टीप्लाइड विथ योर मास नंबर 1.1। देखो 1.1 बाइंडिंग एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई इस मास नंबर। अभी कितने है मेरे पास? 2 है, तो इनटू 2 करो। हीलियम के लिए देखो कितना है, बाइंडिंग एनर्जी 7 है और उसका मास नंबर कितना है? 4। सो कितने है मेरे पास? एक ही है, सो दैट विल गिव मी द आंसर्स फॉर दैट। Yes, sir. ठीक है, जी, sir. ऐसे वाले 2-3 क्वेश्चंस है, देख लीजिए, आपको ईवाईक्यूज में देख लीजिए, दैट विल ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू बेसिकली। सर हाँ बेटा, सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने रिएक्टेंट करना सर यहाँ पे। एनर्जी रिलीज है ना बेटा, हायर एनर्जी वैल्यू माइनस लोअर एनर्जी। एनर्जी कब रिलीज होगी? when 2 neutrons are being combining, isn't it? These are lighter elements. When lighter elements are being combining to form a heavier element, always the energy is released, ओके सर। isn't it? फ्यूजन के अंदर होता है ना बेसिकली। फ्यूजन के अंदर क्या डायग्राम होता है देखिए, बताइए। फ्यूजन के अंदर लाइटर एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ए हेवियर एलिमेंट। फ्यूजन के अंदर lighter elements are combining to form the heavier nucleus, whereas in fission heavier elements are breaking down to become a stable nucleus. Stability Yes, sir. कोशिश करें कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आयरन। डन। यस सर। आपको ग्राफ याद होगा ना, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस योर मास नंबर। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना, ऐसा कुछ होके देन उसके बाद स्टेबल चले जाता है। Yes, मोस्ट sir. स्टेबल एलिमेंट इज राइट नाउ फॉर मी 50 बेटा। उसके बाद 140 और 240 के हाईली अनस्टेबल होते हैं। सो दिस विल ब्रेक हियर, दिस विल ब्रेक टू अटेन द स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन होता है, यहाँ पर एडिशन होता है बेसिकली टू फॉर्म और टू गेन द एनर्जी। तो यहाँ पर फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर फ्यूजन, कंबाइंड हो रहा, और यहाँ पर हो गया फिजन। heavier elements undergoes the fission and lighter elements undergoes the fusion. Clear? Yes, sir. ऐसा मान के चलो, रफली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये y एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी है और x एक्सिस पे इसका मास है, तो मैंने मान के चलो आपको एक कर्व दे दिया ऐसा वैसे, और यहाँ पर मैंने थोड़े पॉइंट्स लिख लिया। मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, और यहाँ पर एक पॉइंट C है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर T, and this one is say for example E, and this one is say for example F. Okay, this is a binding energy per nucleon against the nuclear masses बेटा। तो अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ A plus B कंबाइंड होके C देगा with certain amount of energy, है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूजन, isn't it? यहाँ F क्या है बेटा? हेवियर एलिमेंट है। F will disintegrate to become for me right now E plus of your D plus certain amount of your energy. Can I say like that one? Yes, sir. Isn't it? First one is called as fusion, second one is called as of your fission. Fission. यहाँ जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब ये 240 वगैरह कुछ है,
heavier element. This heavier element will disintegrate into E, T, so on like that one, and try to attain the stability of your iron. That is nothing but 50 के पास. यहाँ पर A, B क्या हो रहा है? Lighter elements are combining to form into a stable nucleus by C. वैसा करते जाए. तो यहाँ पर हो गया मेरे पास fusion और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास fission. Am I clear? Yes, sir. तो कहां से कहां तक स्टेबल रहेंगे बोला बता हमने 50 से लेके 140 के अंदर तक स्टेबल रहेंगे बेटा देन लाइटर एंड हेवियर 50 से लेके 140 तक के जो एलिमेंट्स रहेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ योर स्टेबल एलिमेंट्स डन चलो and radioactivity will try to do it tomorrow आप इसका न्यूक्लियर फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ थोड़े न्यूमेरिकल्स निकाल के पीवाईक्यूज कर लीजिए क्योंकि अभी चैप्टर ऐसा है कि थियरी बहुत ज्यादा चले जाते रहते अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ना इट विल बी कंफ्यूजन अ लॉट तो जितने मैंने अभी मॉडल बनाए हैं या जितनी मैंने थियरी लिखी है उतनी को एक बार दो बार पढ़ लीजिए और पीवाईक्यू कर देके बाद रख दीजिए अब जितना हो सका उतना am I clear with this one? Yes, sir. चलो ये पेपर मैंने आप लोग ऑलरेडी भेज चुका हूँ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन सीन दिस पेपर और आल्सो नोट ये पेपर पूरा आप लोगों को करना है बेटा एक कंपलसरी एवरीवन शुड डू दिस पेपर ऑल दी क्वेश्चंस आप साल भर ने आपने पढ़ाई की हुई है वो तो आप लोग ने किया ही होगा तो एक बार आप कर लीजिए लेकिन पहले अपन वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो अपने को पहले करने के लायक बनते हैं बेसिकली जैसा ये वाला क्वेश्चन है this question we can try to do. A proton accelerated through a potential difference V has a de Broglie wavelength lambda. Then the de Broglie wavelength of an alpha particle when accelerated through the same potential difference V will be equal to how much? Can anyone? Third options. Has a go? Third options. Everyone. Give me the answer in the chat box. Juveria, Madhya, Mariam, Farooq, फुरकान हम लोग कर चुके हैं बेटा ये वाला ऑलरेडी है de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार आज आराम से आ जाएगा फॉर्मूला बोलो इस्माइल लैम्डा इज इक्वल्स टू H upon under root 2m cube is V. equals to h upon under root of your 2m into kinetic energy में इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल में लिख सकता हूँ क्या Yes sir. तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट चले जाएगा सो इट इज 2 into m into e into दिस इज मास ऑफ द प्रोटॉन into पोटेंशियल वी लिख सकता हूं मैं और किसके लिए पूछा द प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए तो ये हो गया मेरे पास प्रोटॉन के लिए उसी तरह से अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूं सो इट इज लैम्डा अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर h तो एज इट इज h ही रहेगा divided by your 2 into mass of this one will be equal to how much for me 4 times the mass of your proton because alpha particle will be 4 times the mass of the proton charge will be 2 times the charge into potential this will be the same isn't it mass of alpha particle is 4 times the mass of proton charge of alpha particle is equals to 2 times the charge of your proton Fourth options. Very good. Fourth option. So कितना आ रहा? So this is your lambda divided by 2 into root 2. Clear? Sir, fourth options. Third option आ रहा है. इस पर रहने दो ये सब पूरा वो हो रहा Please mute yourself better. ब्लैक हो रहा Am I clear?
फोर्थ ऑप्शन आ रहा है क्या? लैम्डा बाय 4 आ रहा है। यस सर, फोर्थ ऑप्शन चार्ज कंसीडर नहीं करें। चार्ज अल्फा पार्टिकल है ना बेटा, चार्ज क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज v. So this will become how much or h divided by 2 times the mass of proton into your potential, 2 times the mass of your proton into charge of your electron into v. बचा कितना फिर नेक्स्ट वन राइट नाउ? सर हाँ बोलो। सर चार्ज कंसीडर करें तो 4 आना सर आंसर। चार्ज कंसीडर करना पड़ता ना बेटा। प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v has a de Broglie wavelength lambda, then the de Broglie wavelength of alpha particle पूछ रहा है ना, when it is accelerated through the same potential. यस सर, मास कंसीडर कर रहे थे खाली, इसलिए थर्ड ऑप्शन है। कंसीडर करना, चार्ज भी कंसीडर करना। Mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. Charge of alpha particle is 2 times the charge of your proton. Charge of your electron, sorry. Charge of alpha particle is equal to 2 times the charge of your electron. प्रोटॉन प्रोटॉन ले रहा है ना, प्रोटॉन ही ले रहा है। ई के बराबर, यानी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द ई। आ गया? यस सर। हमें क्लियर? यस सर। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन ही है ना? फोर्थ था 10। देखो एक बार। यस सर, लैम्बडा। ये लैम्बडा स्क्वायर है ना बेटा। लैम्बडा स्क्वायर इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into मास ऑफ प्रोटॉन into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into your v। अब यहाँ पर बचा कितना मेरे को? यहाँ पर ये वाला चले गया, ये वाला भी चले गया, मास ऑफ द प्रोटॉन इज आल्सो गॉन, दिस 2 इज आल्सो गॉन, e इज आल्सो गॉन, पोटेंशियल इज आल्सो गॉन। बचा कितना है अपने पास? 8 4 into 2। यस सर। This is lambda alpha square. Done? यस सर। यस सर, 2 ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा ना? यस सर, मतलब लैम्बडा अल्फा स्क्वायर मतलब दिस विल आल्सो विल बिकम फॉर मी लैम्बडा स्क्वायर। प्रोटॉन के लिए मतलब लैम्बडा अपन 2m के आ रहा ना सर, तो मतलब 2 कंसीडर नहीं करना पड़ता ना नेक्स्ट उसमें अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल में क्यों नहीं कंसीडर करते? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ योर प्रोटॉन। नो सर, फॉर्मूले का जो 2 है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into मास into your चार्ज ऑफ द पार्टिकल into पोटेंशियल। अच्छा, मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, जो प्रोटॉन के लिए लिख रहा हूँ मैं, लैम्बडा ऑफ योर प्रोटॉन will be equal to your h divided by under root of 2 into mass of proton, charge of proton into potential. अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ तो h divided by under root of 2 into mass of alpha particle, charge of alpha particle into potential. यस सर, थर्ड ऑप्शन वी गॉट, Isn't it? तो ये कितना बन गया? This value will become how much for mu? Lambda square, that is h square divided by 2 mp into ev will be written as of your lambda square divided by 8. So lambda of alpha particle will become how much? Lambda divided by 2 root 2. आया? यस सर, थर्ड ऑप्शन। So question number 7. When electron jumps from an orbit n is equals to 2 to n is equals to 4, then wavelength of the radiation observed will be equal to your how much? Very good question, beta. When electron jumps from an orbit n is equals to 2 to n is equals to 4, then the wavelength of the radiation observed will be equal to your how much? Formula क्या है बताइए जल्दी से, कल मैंने बताया था 1 by lambda is equals to your r into this value will become for me 1 by n1 square minus 1 by n2 square.
यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और n2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 यानी दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी 1 by lambda is equals to r into this is 1 by 2 square सर 16/3 r by फर्स्ट 4 ऑप्शन square. सर हाँ सर 2 to 4 जाना ना सर, n1 4 होता ना, हाँ n1 की वैल्यू 4 होती ना सर। सर फर्स्ट ऑप्शन n1 की वैल्यू कैसे 4 हो जाती है बेटा सर 2 to 4 जाना electron ना is सर। jumping from electron is jumping from देखिए this is ओके your सर, गॉट इट। 1 n is equals to 2 n is equals to 3 n is equals to 4 isn't it 2 to 4 initial to final done यस सर। तो कितना आ रहा है देख लीजिए दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी r into फर्स्ट 1 ऑप्शन by 4 minus 1 by 16 कैल्शियम डाल लीजिए सिंप्लीफाई कर लीजिए what will be the answer which is matching with this one beta 16/3 r 16 by 3 r first option clear 18th 8th one is that one 9th one is work power energy yeah ये देखो this is question number 10 two identical photocathodes receives the light of frequencies f1 and f2 the velocities of the photoelectrons of mass m coming out of respectively v1 and v2 then what is the relation between them photoelectric effect का direct question है बेटा two identical photocathodes receives the light of frequencies f1 and f2 if the velocities of the photoelectrons coming out are given by v1 and v2 then the difference between them will be equal to how much photoelectric equation लिख लीजिए h into frequency f1 will be equal to work function plus kinetic energy half into m into v1 square first metal के लिए second one के लिए h into your f2 will be equal to work function plus half into m into your v2 square this is your second equation और फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन देख लीजिए कितना आ रहा दिस इज योर h into your f1 minus of your f2 will be equal to इसमें से m by 2 will be equal to out क्योंकि डिफरेंस करोगे तो w0 will get cancel work function and this value will become for me v1 square minus of your v2 square यानी I can say that v1 square minus of v2 square will be equal to 2h divided by your m into this will become for me f1 minus of your f2 direct question what is the answer I can write v1 square minus v2 square is equal to 2h divided by m into f1 minus f2 first option done यस सर। यस सर I hope you can do this question better question number 3 match the following column 1 and column 2 जल्दी से बोल दीजिए आंसर match the column 1 and column 2 दिया फिर फोर्थ ऑप्शन सर, फोर्थ ऑप्शन। 13th one fourth option आ रहा a is 1 a 1 आ रहा जॉल नो सर इस 3 r मतलब क्या है बेटा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन स्ट्रेन तो यूनिटलेस है ना जी सर डायमेंशनलेस सर थर्ड 3 r एरिया सर 3 r ये 3 आ रहा तो ये इज 3 ये 3 मतलब दो ऑप्शन में यानी सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन तो चले गया फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में देख लेना बी देख लीजिए y into a divided by l यानी x modulus divided by a divided by l x modulus मतलब y is equals to stress divided by strain
isn't it? स्ट्रेस का अभी कितना है आपको जॉल पर मीटर क्यूब, सो आई कैन राइट हियर जॉल पर मीटर क्यूब इनटू एरिया विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी p वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? न्यूटन पर मीटर में दे रखा है, जॉल में नहीं आ रहा। जॉल पर मीटर से कितना आएगा देखो, मीटर क्यूब है ये, दिस वन इज मीटर क्यूब। ये वाला स्क्वायर चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, यानी दिस विल बिकम फॉर मी जॉल मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जॉल मीटर स्क्वायर तो नहीं है, तो आई कैन राइट y into l is equals to y is nothing but equal to stress, stress मतलब force by area, force by area into area divided by l, l मतलब meter, this one will get cancelled, force is measured in newton and this meter is measured in pi meter आएगा, तो यानी meter inverse, so b will be equal to 2, b will be matching with your 2, so d is matching with your 2, first option done. Sir, how stress is joule per meter cube? क्या बोले? How first A is 3, sir. ये is 3 How, sir? energy density बेटा, u is equals to half into stress into strain, energy का फॉर्मूला energy per unit volume u by v is equals to Okay, half sir. into stress into strain, energy की यूनिट वॉल्यूम, सॉरी जॉल, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, जॉल पर मीटर क्यूब। Okay, sir, got it. No, sir. Yeah. सर आपको सेकंड वाला कैसा है? सेकंड वाला कैसा है, मतलब देखो y ये डिवाइडेड बाय l ना बेटा, y मतलब क्या, स्ट्रेस ना, यस सर। y मतलब क्या, y is equals to stress by strain into एरिया मतलब मीटर स्क्वायर यूनिट, यस सर। एरिया मतलब एरिया ही लिख रहा हूं मैं इसको यहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर लेंथ हो गया लेंथ, तो स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, तो दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया इनटू योर एरिया डिवाइडेड बाय मीटर, ये वाला चले गया, यस सर यस। so force is measured in newton, this one न्यूटन। is in meters, आ गया? जी सर। बाकी का भी चेक कर लीजिए। Yeah, which of the following figure represents the variation of the particles momentum and the associated de Broglie wavelength? Second options. Which of the following figure represents the variation of the particles momentum and the associated de Broglie wavelength? Momentum versus 1 by lambda, rectangular hyperbola होगा ना बेटा, So lambda है तो 1 by lambda है ना, yes, sir. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? h by lambda. E is equals to h by lambda, isn't it? Yes sir. सर स्ट्रेट लाइन है क्या? Which of the following figure represents the variation of the particles momentum and the associated de Broglie wavelength? Sir, if it would be lambda and p, then it would be rectangular hyperbola. Yes, sir. अगर p versus lambda है, p is inversely proportional to lambda, then it will be a rectangular hyperbola, जी सर। isn't it? तो क्या आएगा अभी बताइए? Straight line. Fourth option, yes. This is y is equals to m into x से अगर constant करें, x axis पे 1 by lambda है, and y axis पे momentum है. Done? Sir, if we put मतलब P is inversely proportional to lambda, no sir. If we put 1 by lambda, it will be a straight line. Is If we put 1 by lambda, then lambda will come up is only, no sir. inversely proportional to your lambda. Yes, sir. If we put 1 by lambda, lambda will come up. हाँ, तो ये 1 by lambda है ना, खाली lambda होता तो अपने को rectangular hyperbola आ जाता, Yes, sir. ठीक है ना? Boyle's law कैसा? चल. Question number 15.
An First ideal option. gas goes from the state A to the state B. This is B beta. We have three different processes as indicated in the PV diagram. If Q1, Q2, Q3 indicates the heat absorbed by the three processes and delta U1, delta U2, delta E3 indicates the change in the internal energy along the three processes respectively, then what is the given conditions? Internal energy conditions बताइए. All are equal, sir. State function. State function मतलब internal energy is independent of path. It depends only Yes, on sir. temperature. अब चाहे 1 से 2 को जाइए, 2 से 3 से जाइए, internal energy will remain firmly the same. यानी थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा. आंसर मस्ट बी इधर इन द फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन. दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी सेम है. तो बताओ क्या हो जाएगा, किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी? First option. फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है. देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो दिस वन इज हैविंग मोर एरिया. इसके बाद ये कम है, कम, यानी Q1 will be greater than Q2, Q2 will be greater than Q3 and U1 will be equal to U2 and U2 will be equal to your U3. Yes, yes sir. पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आप लोग आज बैठ के कंपलसरी पेपर खत्म करिए बेटा. जो आपको आते हैं उसको करिए, बाकी के हम लोग फिर कर लेंगे. मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, फोकल लेंथ, कन्वेयर बेल्ट, पोटेंशियल्स, रे ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद फ्रिक्शन, कैपेसिटर, स्ट्रिंग बॉन्ड, थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन, then relation between internal energy. अब ये this is really very good question, but it is लंबा वाला process question है. ये आप लोग कर ही नहीं सकते because this is a lengthy question. You better leave this question and try to do the remaining. अगर आपको आंसर याद है तो याद रख लीजिए, otherwise this is actually a EI question. क्योंकि ज्यादा मैथमेटिक्स लगता है बेटा इसके अंदर. कर सकते हैं लेकिन ज्यादा मैथमेटिक्स लगता है. मैं आपको फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ बोले तो लेट मी नो फॉर दिस वन. इसका आंसर कुछ अराउंड B+1 डिवाइडेड बाय B आना चाहिए. अगर आपको फाइनल में भी आया तो इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली आप आंसर लिख के आ सकते हैं. U is equals to A plus P into PV. What is the value of your gamma? This value of your gamma. So it's gamma or y? Gamma है actually, y नहीं होता. ठीक है ना? You can leave that question, no problem. Then 34, 35 PD graph. ये ट्राई करिए एक बार. Question number 36. For the PD graph, what conclusions can be drawn? Temperature versus pressure का ग्राफ है. Third option. V2 greater than V1. PT versus T ग्राफ है. PV is equals to NR into T. ठीक है ना? Yes sir. T Third option. versus P का ग्राफ होना है. यानी T versus P का ग्राफ मतलब P is equals to NR divided by V into T. यानी P by T will be equal to constant. आपने को आना चाहिए क्या? T by P. यानी T by P will be equal to what for tan theta, है कि नहीं? So इसके अंदर θ2 is greater than θ1. So obviously tan θ2 is greater than tan θ1, isn't it? So V2 will be greater than V1, obviously. Third option. आ गया? Yes sir. Yes. Okay. ये वाला देख लीजिए बेटा. Question number 39. In an adiabatic change, the pressure and temperature of a monoatomic gas are related with the relation P directly proportional to T power C, where C is equal to how much? I told you this process better. ये कौन से फॉर्म में है? PV to the power of gamma is equals to constant, isn't it? और P और T के बीच में रिलेशन है, तो we know the relation P1 minus gamma T power gamma is equals to constant. या P is equals to your K into T power of minus gamma divided by 1 minus gamma. पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं इसके लिए. तो कौन सा गैस है बेटा? मोनोएटॉमिक गैस. For monoatomic gas gamma की वैल्यू कितनी होती है? 5/3. 5/3. तो C value will be equal to how much बेटा? For C is equals to वर्ग gamma divided by gamma minus 1. And this is your 5/3 divided by 5/3 minus 1. So that will come out for me 5/2. Third option. Done.
40 is kinematics का question है, then possible oscillations. Yeah, 42. Can you try the output y when all the three inputs are first high and then low will be respectively how much? This already हम लोग कर चुके हैं already. फोर्थ ऑप्शन सर. Fourth option, very good. Ditto question already हम लोग कर चुके हैं बेटा. Yes, sir. 43 is gravitation, self-inductance. Bernoulli's theorem for steady state eighth of fluid mechanics का question हो गया. सर व्हाट इज आंसर सर 45? कौन सा बेटा? 45 45 का क्या होगा देखिए. Bernoulli's Energy, equation of a steady state non-viscous incompressible flow express the conservation of energy ना. एनर्जी. यस सर. Conservation of energy. यानी 45 4 will be the answer. Then the effect ये हो गया vector perpendicular to that one circular motion. Yeah, this question you can do it out better. This is 49. Units and dimensions. If A is equals to B plus C by D plus E, the dimensions of B and C are how much? Are given as M0 L T power minus 1, M0 L1 T0 respectively. Find the dimensions of A, D and E. अब ऐड कर रहे हैं मतलब dimension of D must be equal to dimension of E. DA must be equal to your B. 2 और 3 सर. Isn't it? A must be equal to B, यानी B का डायमेंशन जो होगा ना A के बराबर होगा. B का डायमेंशन क्या है? M0 L T power minus 1, M0 L T power minus 1, M0 L T power minus 1. यानी सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन. Third option. Third option, sir.